Hey everyone, this is video number 6 in the series of Mixture and Alligation, and in this video I am going to be solving all the questions that appeared in CAT 2018 and 2019 from this topic. So these questions are there in the description box. First you go practice those questions, एक बार लगाइए, देखिए आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं, and then you continue watching this video. So my first question that came in slot 1 2018 CAT is: a trader sells 10 liters of mixture of paints A and B when the amount of B in the mixture does not exceed that of A. तो ये सिर्फ कंफ्यूज किया जा रहा है कि 10 लीटर का मिक्सचर है, A और B का है, उसके आगे कहानी पढ़ते हैं. The cost of paint A per liter is 8 more than that of the cost of B. So ये बोला जा रहा है कि there are two variables, cost and quantity. So cost of A is 8 rupees more than that of cost of B. And यहाँ पे क्या बोला है, where the amount of B in the mixture does not exceed that of A. अब आप ये देख लो. If the trader sells the entire mixture for rupees 264 and makes a profit of 10%, so ये 10 लीटर बेच के कितने का बेचा? 10 लीटर 264 रुपीज का, and then the shopkeeper is making 10% profit. Video number 3 of this series we discussed these kind of problems as to how you should be doing them. अब आपके पास में मिक्सचर का सेलिंग प्राइस है 264 रुपीज. So selling price has been given to you as 264 rupees. How do we find out cost price? So 264 is going to be 110% of CP. That is what we have done in profit and loss. Another 10 videos for you. If you have not seen them, go watch those videos. अब मैं ये सारे शॉर्टकट यहाँ पे तो लगाऊंगा नहीं, explain करूंगा नहीं. So that's gonna be 264 comes out as, if you simplify this, 11 by 10 into CP. So CP comes out as 264 10 by 11, and if you further simplify this, it is coming out as 240 rupees. So 240 rupees is going to be cost price of 10 liters of mixture of A and B. So what is going to be per liter price? So per liter price of the mixture comes out as 240 divided by 10, that comes out as 24 rupees per liter. That is the price of the mixture. Right? Now, what does this problem say, and how are we going to be applying the alligation method here? Say, you have got B and A. Price of the mixture is given to you as 24 rupees per liter, isn't it? And then it also says that the cost of paint A is 8 rupees more. So what does this mean? That the cost of A obviously is going to be more than cost of B, and if you really want to apply the method of alligation, you should be aware of this fact that the price of A will have to be more than 24, whereas this will have to be less than 24. B cannot be more than 24. That's for sure. क्या कुछ option eliminate कर पा रहे हैं हम? D is gone. Did you understand this? D is gone. Now there are other 3 options, 20, 22 and 16. Understand this. So cost of B as per the rest of the 3 options that are left is given to us as 20. मैं तो यही हेल्प लूंगा, मैं क्यों सॉल्व करूं इस चीजों को, क्योंकि इनमें से कोई एक ऑप्शन होने वाला है वो. And then this is 22. What is going to be the value of A then? A कितना आ गया यहाँ पे? A आ गया यहाँ पे 28, because the cost of A is 8 rupees more than cost of B. In this case it is 24, and in this case it has to be 30. एक और ऑप्शन उड़ गया. कैसे का ऑप्शन उड़ गया? आपको पता है कि the cost of A will have to be more than 24 because cost of mixture itself is 24. तो इसका तो obviously इससे बड़ा ही होगा, और अगर इससे बड़ा हो गया तो फिर एक ऑप्शन मैंने और eliminate कर दिया. So this is gone. What is that we are left with? We are left with two options, whereas 20 and 22 rupees. So this is also gone. So we are left with option A and B. चलो लगा के देखते हैं. अगर मैंने B को लिया 20, understand this. अगर B को लिया 20 तो A को कितना लेना पड़ेगा? A को लेना पड़ेगा 28. ठीक है जी. और अगर ऐसा हो गया तो 2 प्राइसेस हैं, एक याद करके रखें. एक था 20 B का and 22. So first let us apply 20 and then we will see what is 22. So 28 minus this is coming out as 4, and 24 minus this value, it is coming out as 4. So this is 1:1 ratio. What is the meaning of saying 1:1 ratio?
The meaning of saying 1:1 ratio is the quantity of A and B will be the same, which is 5 liters of A and 5 liters of B. यही हुआ ना भाई, 5 liters of A and 5 liters of B. ये कैसे हो गया, हाफ एंड हाफ. अब आपके पास कहानी में बोला क्या गया है, ध्यान से देखना. वेयर द अमाउंट ऑफ B इन द मिक्सचर डज नॉट एक्सीड दैट ऑफ A. ठीक है, एक तो ये हुआ 5 लीटर इसका और इसका. इफ आई टेक दिस एज 22 liters, 22, then what is going to happen? If B is taken as 22, mixture is 24, and then A will have to be 30. So this is coming out as 4, this is coming out as 6, and this one comes out as 2, which is 3:1. And what is the meaning of 3:1? Over here, this is going to be 2.5 liters and this is going to be 7.5 liters. काम आपका खराब हो गया, because quantity of B should not be more than quantity of A. So what is going to be the maximum price? The maximum price out of 22 and 20, what is the price that we are having? 20. That's it. Problem simplified. अगर आपने वो मेथड सीखा हुआ तो यहाँ पे आपका काम आ रहा है. और उनके साथ में एक नई चीज आप क्या सीख रहे हो, ऑप्शन एलिमिनेट करना. कहां पे हम इन प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करते बैठेंगे, 4 ऑप्शन में से एक ही सही होगा, ऑप्शन को लगाएंगे, अपना काम सिंप्लीफाई करेंगे. तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस प्रॉब्लम पीपल. लेट अस ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम आउट हियर. एक तो ये अंडरस्टैंडिंग बड़ी जरूरी है कि कैलकुलेशन लंबा जाएगा क्या. ये जैसे द मोमेंट आई रीड दिस प्रॉब्लम आई नो फॉर श्योर दैट हाफ पेज से पहले तो मैं इसको फिनिश नहीं कर पाऊंगा. तो ये अंडरस्टैंडिंग बड़ी जरूरी है. सो व्हेन आई एम गोइंग टू बी सॉल्विंग लेवल 1 प्रॉब्लम्स, इसको इवन दो आई नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई वुड नॉट डू दैट, राइट. इसके पहले मैं क्या करूंगा, सिंपल वाले प्रॉब्लम लगाऊंगा. जैसे ये प्रॉब्लम, दिस वॉज आस्क्ड इन कैट 2019 एंड स्लॉट 1. ये 2 लाइन का प्रॉब्लम है, अपने आप बन के आएगा. एंड देन आई विल गो बैक टू सॉल्व दोस काइंड ऑफ प्रॉब्लम. सो इट सेज दैट अ केमिस्ट मिक्सेस 2 liquids 1 and 2, 1 liter of liquid 1. So I'll say liquid 1 1 liter weighs 1 kilogram. So 1 liter weighs 1 kilogram. And then you have got liquid 2, and this is going to be 800 gram. Does this make sense to you? So 1 liter of liquid 2 is weighing 800 gram, whereas 1 liter of liquid 1 is weighing 1000 gram. अब आपसे क्या पूछा गया, if half liter of the mixture is going to be weighing 480 liters, if half liter is going to be weighing 480 gram, what is going to be the weight of 1 liter of the mixture? That is coming out as 960 gram. So this one comes out as 960 gram here. So weight of 1 liter of the mixture is 960. काम simplified हुआ ना भाई. देखो ये प्रॉब्लम अगर आपने देखा तो ये आपसे बनना चाहिए. So this minus this comes out as 40, and then 960 minus 800 is coming out as 160. In what ratio we are going to be mixing them? 1:4. Simplify कर लो. It is coming out as 1:4. Now if 1:4 का मतलब क्या हो गया, यहां पे 1:4 का मतलब हुआ in the mixture of 1 liter 1/5 will have to be liquid 2 and 4/5 will have to be liquid 1. And what is that they are asking you? Then the percentage of liquid 1 in the mixture. It is 4/5 and it is 1/5. What do you think is going to be the percentage of, percentage कैसे निकालते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके, यही है ना भाई. So 20% is going to be liquid 2 and 80% is going to be liquid 1. ये है बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम. देखो ज्यादा मेहनत लगी क्या, बिल्कुल मेहनत नहीं लगी. क्या आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या, ये है तो सिंपल, बट पढ़ते ही मेरे को समझ में आना चाहिए कि भाई ये सिंपल है और अभी मेरे को करना चाहिए, यही है ना. तो ये तो सिंप्लीफाई किया और मेरा आंसर बन गया. अब आई एम गोइंग टू बी सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम्स जहां पे कैलकुलेशन लगेगी. जैसे दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी वर टॉकिंग अबाउट. इट सेज दैट द 20% ethanol solution is mixed with another ethanol solution, say
S of unknown concentration in the proportion of 1:3 by volume. There are two solutions that we are talking about. एक तो है solution 1 जहां पे 20% ethanol है, यही है ना, and say there is another S over here, say unknown concentration X% ले लो, क्या फर्क पड़ता है, and they are being mixed in 1:3 ratio. मैंने आपको वीडियो नंबर 2 में बड़े अच्छे से इस चीज को समझाया था कि ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है. There are only 4 things in the alligation and in the alligation problem. 1, 2, the concentration of the mixture and in what ratio they are being mixed. अब आप देखो वो क्या कह रहा है कि ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो दी नहीं, isn't it? और प्रॉब्लम में इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन दिया नहीं जा रहा है, एंड देन दे आर सेइंग दैट इट हैज टू बी मिक्स्ड इन 1:3 रेशियो. चलो जी, मान लिया कि जो मिक्सचर है उसका कॉन्सेंट्रेशन है y%. व्हाट इज दैट y%? विल फिगर इट आउट. एंड देन this mixture is then mixed with an equal volume of 20%. So 1:1 ratio, equal volume बोलने का मतलब 1:1. So in the second situation, further you are mixing S1. S1 concentration of S1 is obviously 20%, and then you have got this mixture out here, and the concentration of mixture is y%. That I do not know. But if you mix them, then the resultant mixed concentration is coming out as 31.25. So यहाँ पे ये आ गया 31.25%. और जो की है ना वो ये है, then the mixed with equal volume. Equal volume जैसे ही आपने बोला, आपने क्या बोला, ये 1:1 है. जैसे ही 1:1 बनी, काम खत्म हो गई भाई. क्यों मालूम है क्या आपको? कम से कम ये तो पता है ना, this minus this, obviously 20 is less than this, so y% will have to be more than 31.25%. अब जो ये डिफरेंस निकल के आएगा यहां पे, ये डिफरेंस यहां पे निकल के कितना आया? 11.25. 31.25 minus 20, and if it has to be 1:1, then this difference will also have to be 11.25%. Does this make sense to you? And if this difference will have to be 11.25%, ये आएगा कहां से? y% minus this value will have to be this. Did you understand? It has to be something like y%. That is what you have done. Y% minus 31.25%. Now this difference comes out as 11.25%. So what would have been y? Y would have been the sum of these two, which is coming out as 42.50%. Does this make sense to you? So y का concentration तो मेरे को पता चल गया. अब आप देखो यहाँ पे y मेरे को पता है. जैसे ही मेरे को y पता चल गया, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे? This value is 42.50%. Do you understand this? See the beauty of the problem. अब आपको ये पता चल गया तो this minus this आपको यहां पता चल गया. अब this minus this 42.50% minus 20% is coming out as 22.50. And if 22.50 is 3 part, what is going to be 1 part? 7.50. ये कैलकुलेशन तो बननी चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए फिर ये. So 22.50 is 3 part, 1 part obviously is 7.50. 7.5 आएगा कहां से? This minus this. So X% minus this has to be 7.50. So what is the value that I should be taking? Simplified. Problem खत्म है. X minus some 42.50 has to be 7.50. What is the concentration of X? It is 50%. काम खत्म. 50% आंसर. प्रॉब्लम है ना सिंपल, बट ये 2 स्टेप का प्रॉब्लम है. अगर आप पिछले वाले प्रॉब्लम को देखोगे वो तो एक स्टेप में आपका बन गया. ये वाले में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप ना मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यहीं पे फंसेंगे. उनको ये नहीं दिया, वो बेचारे सोचेंगे आप क्या करें. नहीं दिया बाबा, ये वाला यहां से निकाल दो, फिर इसको यहां पे वापस प्लग इन कर दो और x को निकाल दो. Is that okay with you? I hope you have understood. This is such a good. So let us try to solve this problem. I know that it is going to take a lot of calculation, but then let us solve it. It says that there are 2 drums, each containing a mixture of paints A and B. In drum 1, A and B are in the ratio of 18:7. The mixture from drum 1, so you have got drum 1 and then say drum 2, right? A and B are mixed in drum 1 and drum 2.
and the content of drum 1 and drum 2, they are being mixed in 3:4. So video number 4, all the problems like this are solved in video number 4. Now, what does this say? What does this say? I told in video number 4 that you should be concentrating on either A or B. So I'm going to be concentrating on A in drum 1, A in drum 2, what is A in the mixture, and then in what ratio they are being mixed. So in drum 1, A is 18 by 25. How did I get this? 18:7 is given to you. So 18 plus 7 is 25. So that is the quantity of A in drum 1. How about drum 2? We don't know. Say the ratio of A in drum 2 is X. And if you mix them in 3:4 ratio, then in the mixture A and B are in the ratio of 13:7. So in the mixture, you should be writing 13:20. Did you understand this? And if that is the case, first you should be able to find out. अब यहाँ पे तो ये पता ही नहीं कि x बड़ा है या छोटा है, तो बट यहाँ से तो आप कंपेयर कर सकते हो. नाउ यू नो अ मेथड जहां पे अगर आपको पता करना है 18/25 बड़ा है या 13/20 बड़ा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वीडियो नंबर 4, गो एंड वॉच दैट वीडियो, दैट डाउट विल बी क्लियर्ड. व्हाट डिड आई से? यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे को ये पता चल जाएगा विच रेशियो इज बिगर. सो 20 into 18 is going to be how much? 360. Whereas 25 into 13 is going to be how much? 325. 325. This is bigger than this. So obviously 18/25 is bigger. So 18/25 मेरे को ये पता चल गया कि इस वाली वैल्यू से बड़ा है. तो इसका मतलब क्या हुआ? This x is going to be smaller than this. आपने क्या सीखा है एलिगेशन मेथड लगाते हुए? You have to be subtracting smaller from the bigger. So this one will have to be written as 18/25 minus 13/20. And how much you should be writing over here? How much you should be writing over here? It has to be 13/20 minus x. So ये तो ratios हुए यहाँ पे, और ये जो फाइनल बन के आएंगे वो क्या बन के आएंगे? ये बन के आएंगे 3:4. थोड़ी तो कैलकुलेशन है यहाँ पे. चलो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं. This one out here. So this one is coming out as what? The LCM is 100. So this one is 72 minus 65. So this comes out as 7/100. And how about this? This one comes out as 13 minus 20 x upon 20. So this is the first, this is the second. And one thing that you know for sure is this upon this is given to you as 3:4. तो आप this upon this कैसे लिख लोगे? Upon 20. If you divide, then denominator will go in the numerator and numerator will go in the denominator, and this value is given to you as 3/4. Would you be able to find out the value of x? यहाँ से निकल जाएगा. So 4, this is going to be how much? 5 is 20. Do the cross multiplication. What is that you will be getting? So this is going to be 3 to the 260 minus 400x equals to 21. And if that is the case, how much is going to be the value of x? How much is going to be the value of x? So 400x comes out as 239. So the value of x comes out as 239 upon 400. That is it. But हाँ कैलकुलेशन लगी है ना? ये अवेयरनेस बड़ी जरूरी है कि भाई क्वेश्चन लगाया तो आगे कितने स्टेप में बनेगा. So this one x comes out as 239 upon 400. Now look at the options out here. Let me change the color of the pen. So this one comes out as 239 upon 400. But none of the options is having 400. आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? In drum 2, then A and B were in what ratio? If A is 239 upon, so this is the total. So you have to find out B. So what is that you're gonna do? 400 में से 239 को subtract कर दो. 239. If 400 minus 239, this comes out as 161. That is going to be the proportion of B. So A and B were in the ratio of 239
एंड 161, तभी तो ये बन के आया था ना 239 डिवाइड बाय दिस प्लस दिस विच इज 400। कितनी सही प्रॉब्लम है, बाप रे। हाँ बट टाइम लगा मेरे को ये लगाने में, बट मेरे को ये पता है कि देखो स्टेप लगाएंगे तो मैं तो क्वेश्चन छोड़ के चला जाऊंगा, इसको मैं नहीं लगाने वाला, बट प्रॉब्लम बनेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना तो सारे के सारे प्रॉब्लम आपसे बनेंगे। सो लेट अस सॉल्व, आई गेस वी हैव सॉल्व दिस वन, राइट? we have solved, we did not solve this one. So this question is going to be your homework kind of thing, but I can give you one very important shortcut out here. It says that 2018 slot 2, देखो 2018 में बड़े प्रॉब्लम पूछे गए थे कैट से। A jar contains a mixture of 175, एक ही अगर स्लॉट में दो तीन क्वेश्चन मिक्सचर से आ जाए तो फिर आप क्या करोगे? कितने अवॉइड कर लोगे? और इसमें रेशियो का भी यूज हो जाता है, इसमें परसेंटेज का भी यूज हो जाता है, तो इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम टू चेक द नॉलेज ऑफ रेशियो and percentage and alligation. So a jar contains a mixture of 175 ml water. So water is given to you as 175 ml, and then alcohol is given to you as 700 ml. Does this make sense? Then you are taking out 10%. So I might have told you in just previous video, इसके पहले वाले जो वीडियो नंबर 5 है उसमें रिप्लेसमेंट के सारे प्रॉब्लम्स हमने लगाए थे। अब अगर 10% आप निकालते हो ना तो 10% वाटर का भी निकलेगा, 10% अल्कोहल का भी निकलेगा, एंड देन यू आर डूइंग इट 2 times. प्रॉब्लम सेज दैट 10% ऑफ द मिक्सचर इज सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर. अगर आपने एक बार यहां से निकाला तो 10% ऑफ 700 निकालना बड़ा आसान है ना भाई. सो ये कितना बच गया? अल्कोहल बच गया 630 ml. और अगर दोबारा आपने 10% निकाला तो वाटर पे कॉन्सेंट्रेट करो ही मत. मैं कह रहा हूं इसका भी तो 10% निकल के जाएगा ना. आप मिला रहे हो वाटर, लेकिन जो अल्कोहल बचा वो तो इतनी बचा, इसका तो 10% निकल के जाएगा. एंड इफ यू टेक आउट 10% ऑफ दिस वैल्यू, व्हाट इज दिस? 630 minus 63. What is this value? So this is coming out as 7 and this is coming out as 12 minus 6, and this one is how much? 567 ml is alcohol. और मेरे को ये पता है कि जितनी भी बार मैंने अल्कोहल को रिप्लेस किया, मैंने वाटर मिलाया हुआ है, तो इसका मतलब ये 700 ml अल्कोहल प्लस 175 ml वाटर, 875 ml तो मेरा मिक्सचर बना ही रहेगा. दैट इज गोइंग टू बी द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर. और अगर मेरे को पता चल गया कि अल्कोहल इज 567 ml, कैन यू फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग टू बी द वाटर? फटाफट आसान काम बनाइए, यहां से आप निकाल दो. ये दिस इज 567. So this is coming out as 8, isn't it? And this is coming out as what? This is 6, this is 0, and then 308 ml. अब वाटर भी पता चल गया आपको. वाटर अब फाइनली जो बच गया वो बच गया 308 ml. How much is the alcohol? 567 ml. What is the problem? The percentage of water in the mixture. Understand this. Collectively तो है कितना? 875. आपको निकालना है कि 308 is what percent of 870, sorry, my bad. 308 ml is what percent of 875 ml. अब प्रॉब्लम को ऑप्शन देखो ना, कहां पे लगाते फिरोगे. अगर आपको ये पता है कि 875 ml is 100%, so 87.50 आपको पता चल गया कितना? 10%. इसका 30% कितना होगा? ये निकालना बड़ा आसान है ना. 30% निकालना कितना होगा? तो 90 into 30, 270 एंड 262.50. आप कैसे करोगे ये आप देख लो. सो 262.50 ml पे तो 30 आ गया, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत. बचे 30.5 एंड 35.5. 30.5 हो ही नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता? यू नो, क्योंकि अभी आपके पास में जाना कहां है? आपको 308 तक जाना है. अभी तक आपने 308 तक गए कहां? 262 तक ही टिके हो कहीं ना कहीं. तो 38 प्लस 8 अभी 46 45 और आके जाना है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गया. व्हाट इज आंसर? दिस इज द आंसर. क्या कैलकुलेशन अब बचाई मैंने? हाँ बिल्कुल कैलकुलेशन बचा ली. तो दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न, दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द टाइम. इफ यू डू थिंग्स स्टेप बाय स्टेप, they are not going to solve your purpose, right? So this is what we had in this video. I guess we have solved all the questions. A lot of effort goes into making such videos. सारे questions compile करो, फिर उनको ऐसे solutions आपको देने की कोशिश करो ताकि आप उनको अप्लाई कर सको. बट इन वीडियोस को सॉल्व करने के पहले आपको वो सारे के सारे प्रीवियस वीडियोस भी दो, सारी की सारी थियरी भी दो. सो बट माई ऑब्जेक्टिव इज एब्सोल्युटली क्लियर. आप इन प्रॉब्लम्स को लगा लो, आप IIM चले जाओ, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए.
आप IIM पहुंच गए, वहां से एक मैसेज डाल दो, सर मैं पहुंच गया, आई एम गोइंग टू बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट। सो आई एम गोइंग टू बी सॉल्विंग कैट 2020 एंड 2021 प्रॉब्लम छोड़ूंगा नहीं मैं, सारे के सारे कराऊंगा। 22 आएगा उसका भी लगा के दूंगा मैं आपको, आपको बस लगाना है इसको। सो आई एम गोइंग टू बी सॉल्विंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, bye bye and take care. And if you haven't solved video number 1 to video number 5, this is where we have built our theory, isn't it? तो आप पहले वो theory जब तक बनेगी नहीं ना, तो फिर ये टफर प्रॉब्लम्स लगाने का कोई मजा है नहीं। और इनके साथ में वो जो 12 वीडियोस आपके पास रेशियो प्रोपोर्शन के, उसको भी लगाना जरूरी है। एंड देन उसके बाद उसके पहले जो 10 वीडियोस आपके पास परसेंटेज के, उसको भी लगाना जरूरी है। तो 10 वीडियो परसेंटेज की, 12 वीडियो रेशियो प्रोपोर्शन की, 7-8 वीडियोस की, जब आप 30 वीडियोस लगा लेते हो ना, तो जाके आपको 3-4 क्वेश्चंस लगाने का कॉन्फिडेंस बिल्ड होकर आता है। और ये सारी चीजें फ्री है ना भाई, तो फ्री चीजों का बेनिफिट उठाओ, लगाओ इनको। चलो जी, ओके देन, टेक केयर, बाय बाय।